हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है लिनक्स काली। तो लिनक्स काली जो है एक है जो मोस्टली सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। सो लेट्स बिगिन। उसका यूआई कुछ इस तरह से दिखेगा तुमको वंस यू इंस्टॉल इट। Kali Linux is a specialized distribution of Linux designed primarily for penetration, which means act of gaining access to something that is normally protected or hidden. तो जो चीज़ें प्रोटेक्टेड होती है और हिडन होती है उसको एक्सेस करने के लिए पेनिट्रेशन का मीनिंग होता है. सो दिस इज काली इज यूज्ड फॉर दैट. Secondly, security auditing. The third one we can say ethical hacking. It is based on Debian or Linux and comes pre-installed with wide range of some tools for security professionals and hackers. So there are key details which we can talk about Kali Linux, the purpose and focus. Kali Linux is designed for security testing and penetration testing. So these two are the primarily goals we can say, or the focus where we can use. It is a preferred tool for tasks such as network analysis, forensics, cryptography, wireless network attacks and social engineering, and also for password cracking and much more. Key features: there are a number of applications or we can say tools which are already installed in this, so you don't have to worry about this because आपको अलग से कुछ नहीं करना है. So we can say that network scanning, there are a number of things like nmap, then metasploit, wireshark, then aircrack, ng, john and repo, burp suit. So these are the applications which are already installed in Kali Linux. Then we can say that this is customizable. Customizable का meaning ये होता है कि you can change something, you can tailor something, you can change something according to your specialization, specification, and your requirement. You can change the configuration and adjust the environment as needed. What else? This is live boot. Kali can run as a live system without installation, make it easy to perform test and systems without modifying them permanently. Then the third one, we can say that multiple platforms are available. Kindly supports installation on a variety of platforms, including back desktops, laptops, virtual machines, and even Raspberry Pi, Android, and cloud platforms. Security updates. So there are a number of things you can use Kali for penetration testing, as we have already told you. Ethical hacking, security research, forensics, and number of things. So let's begin the process. Open your favorite web browser. Mine is Chrome. So let me begin with that. उसके बाद तुमको करना है वर्चुअल बॉक्स को सर्च. वर्चुअल बॉक्स सर्च करना है और जो ओरेकल वाला होता है दिस वन www.virtualbox.org. क्लिक ऑन इट and say download. Once you see this, you have to install for Windows. So I'm selecting Windows host because I'm downloading for Windows. Let's wait for some time. Once you get installed, we need to install it. Once you get downloaded, hang on a moment. Yes, here we go. So you need to open the folder, say yes, and then you see this one, say next. Then you have to accept the terms and conditions. Then no need to make any changes over here. And since this is offered by Oracle, so that is why the option is coming as Oracle. Say yes, next, yes. And you can keep all of these as selected because this is telling something. Create start menu entries, create a shortcut on your desktop, create a shortcut in the quick launch bar, register file associations. Say next, install, and here we go, it is getting installed. So kindly hold for a moment. Meanwhile, what we can do is we can go to this one, Kali Linux, and then go on this kali.org, go over here and then go to downloads. You see this should be selected virtual machines, which is the green one. Then go down, you see this option, hang on a moment. Yes, this one, it should be 64 bits and you have to install, you have to this one VirtualBox you have to download. So just let's see what is the
progress of this installation. It might take some time because it is getting installed on your machine, so probably it takes certain time. Here we can see that this got finished. All right, so this is how it looks like once you install the virtual machine. So this is how it looks. Linux Kali it is showing as here. Just ignore it because might be this is coming because last time I already installed on my machine. So that is the reason. Once you are on the page of Kali Linux, you click on this virtual machine because we are installing as virtual machine, not we are not doing dual port. Then go down, 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 a little bit more. Yes, once you see this screen 64 bits, click on VirtualBox. Once you click it, it is getting installed. Hang on a moment, meanwhile it gets installed. Then you have to open in 7-zip file manager just once because the file has the zip extension, and for that you need to install 7-zip on your machine. It probably takes a very few seconds to get installed. You have to install this one 64-bit and then click on download. Once you get installed on your machine, it just takes few seconds. Yes, just click on it and do yes. Yes, say install. It is getting installed. So wherever it is getting installed in C, just get it installed. That is not a problem. So hang on a moment. Meanwhile, it gets installed. I think it's already been installed, so we can close it. कि काली लिनक्स में डाउनलोड्स के अंदर इसको राइट क्लिक करना है आपको और करना है ओपन विद, इसमें करना है आपको चूज अनदर ऐप। ये जैसे आ जाता है, एक्चुअली 7-zip मेरा ऑलरेडी ओपन है, इसके लिए आपको ऐसे आ रहा है। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको नीचे जाना है और यहाँ पर बोलना है चूज एन एप्लीकेशन ऑन योर पीसी और विंडोज। यहाँ पर लेना है 7-zip। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से लेना है 7ZFM और इसको कर देना है ओपन। यहाँ पर 7Z फाइल मैनेजर आ जाएगा और इसको करना है जस्ट वंस। ये ओपन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करना है आपको एक्सट्रैक्ट। तो पहले सिलेक्ट करो और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पर आप क्लिक करोगे, आपको लोकेशंस आ जाएगी कि आपकी लोकेशन कौन सी है। तो मेरी लोकेशन है यूजर्स बागमार बागमार डाउनलोड्स के अंदर। तो ये एक्चुअली मैं ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुका। आपको क्या करना है, ओके करना है। अब मैं इस लोकेशन पे जाता हूँ। लोकेशन था मेरा सी ड्राइव के अंदर यूजर्स, देन माय यूजर नेम, then downloads. So here there would be one folder which is already in extracted mode. One moment. मैंने यहाँ पर किया, एक्चुअली डी में किया है मैंने उसको। तो जब तुम ये ओपन करोगे इस फोल्डर को, तुम डी में भी कर सकते हो और सी में भी कर सकते हो, ड्राइव लोकेशन चेंज कर सकते हो। इसमें ओपन करने के बाद तुमको कुछ इस तरह से दिखेगा। अब क्या करना है, इसमें दो आएंगे, एक ब्लू कलर का होगा और एक रेड कलर का होगा। इसको कर दो मिनिमाइज। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको क्या करना है, वर्चुअल बॉक्स ओपन करना है। वर्चुअल बॉक्स ये जब आप ओपन करोगे तो ये मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसके लिए साइड में काली लिनक्स आया है। बट आप जब पहली बार करोगे तो ये जब आप इस पर क्लिक करोगे, ये ब्लू वाले पर, वंस यू क्लिक ऑन योर ब्लू बॉक्स वाला काली लिनक्स वाले पर, देन इट गॉट अपीयर्ड हियर। उसके बाद आपको करना है सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करने। सेटिंग्स में जाओ और सेटिंग्स में क्या करना है आपको, सिस्टम्स में जाकर प्रोसेसर में आप इसके सीपीयू की साइज बढ़ा सकते हो। लाइक यू कैन गो अप टू 4 सीपीयूज। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप स्टोरेज में जाओ और यहाँ पर आपका काली लिनक्स का जो रेड वाला है ना, ये वाला, हैंग ऑन अ मोमेंट, दिस वन, इसको आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। अगर अवेलेबल ना हो तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पर से प्लस करके ऐड कर सकते हो। इसको कर दो क्लोज। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। once you start, so it takes certain time and it loads to your Kali Linux, so just wait for some time. It probably takes certain time to open in your machine. See, here it is loading. So this is how it looks like. I hope I was very clear. If you still find any difficulties while installing, so you can comment below or you can reach out me over Instagram.
My ID would be mentioned below. So let me just show you how it looks like after installing. Hang on a moment. And it will ask for username and password. So the username and password would be Kali, Kali, all in small. So this is how it looks. It is loading. Yes, here you have to provide your username as Kali, password as Kali. Once you log in it, you can go to view and do full screen mode and click on switch. So it will load in certain time. So this is how it looks. एंड यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप टर्मिनल ओपन कर सकते हो. यहाँ पर सपोज if I want to write if config command, if config like basic network commands. और यहाँ पर जब जाओगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑलरेडी इनबिल्ड एप्लीकेशंस हैं, लाइक nmap हो गया, zenmap हो गया, and even wireshark. So there are a number of applications inbuilt here. Thank you for watching my video. Have a nice day.